everybody, welcome back to my channel. तो चलिए start करते हैं next topic. We have already discussed about the appreciation and depreciation and one little topic, what will be the impact of increase in demand of US dollar on the domestic currency. So हमारा next topic है what will be the impact of decrease in demand on the domestic currency. So decrease in demand of US dollar on domestic currency. So this we'll try to understand with the help of a diagram. On the x-axis we'll consider demand and supply of US dollar. Okay, and on the y-axis we'll consider rate of exchange. This is demand of foreign exchange, supply of foreign exchange. This is the basic diagram, okay, and this is the point of equilibrium, and here the quantity of demand and supply of US dollar will be considered, and this will be rate of exchange. Okay, so now what next step is decrease in demand. I already told you that whenever there is increase in demand or supply, this will be to the right side, and when there is decrease in demand and supply, this will be to the left side. Left side leftward shift करेगा curve, ठीक है. This is the demand curve, and यहाँ से देखो आप left कौन सा है, this side. Okay, left side this one. So this will draw the diagram, new demand curve. Where the demand and supply intersect, that is the new equilibrium, and here the new quantity will be determined and new rate of exchange will be determined. Make it sure कि ये जो आपकी डायग्राम की लाइंस हैं ये पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए. ओके, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप लोग स्केल ले जाना. मैंने तो क्लास 12th कर लिया, आप लोगों को ज़रूरत है तो यू नीड टू फोकस मोर इन द डायग्राम. एनीवेज, तो क्वांटिटी शिफ्ट हो जाएगी टू द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज. सो ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे. मीन्स अर्लियर वी हैव टू पे rupees 60 to buy a dollar. Now we have to pay rupees 50 to buy a dollar. Means earlier we had to pay, means $1 was equal to rupees 60 you can say, and now $1 is equal to rupees 50. तो ये क्या हो गया, appreciation के depreciation. Now we have to pay less dollars, less units of domestic currency to buy a dollar. That means there is appreciation in domestic currency. इन तो क्या ऑफ ही लगाओ आप, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. वैसे इन ऑफ का इतना बड़ा इशू है नहीं, इकोनॉमिक्स में तो बिल्कुल ही नहीं है, बट स्टिल चलो. ये हो गया आपका, जो डिमांड डिक्रीज होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में. What will be the impact of increase in demand? What will be the impact of decrease in demand on the domestic currency? तो क्या impact हो गया इसका, domestic currency की value appreciate हो जाएगी. Appreciate means now we have to pay less units of domestic currency to buy a dollar. I hope you all are clear with this. तो ये था एक छोटा सा वीडियो. नेक्स्ट हम करेंगे सप्लाई का क्या इम्पैक्ट होगा. लास्ट वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी तो इसीलिए मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया था. सो आई थॉट टू कंप्लीट इट नाउ. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड.